Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayo Radha Madhav, Radhe, Jayo Radha Shyam Sundar, Radhe, Jayo Gauranitai, Jayo Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Nitya Gaur Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaur Hari Bol, Nitya Gaur Premanande Hari Hari Bol. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Nice Kirtan. You are practicing and it is showing, Mataji. Wonderful, wonderful. Thank you so much. Hare Krishna and Pranam, dear devotees. Acha quiz has come. So, Hare Krishna, Babu. Let us attempt the quiz. Jab tak. Yes. वो क्विज चलते चलते बंद हो गई प्रभु. I don't know what happened. Okay. कुछ मैंने किया क्या? एक मिनट. वो क्विज का लास्ट क्वेश्चन चल रहा था. नहीं है. हो गया. वो जूम की स्क्रीन फुल हो गई होगी. Yes. Can I display the results, Prabhuji? Yes, Prabhu. Let us see.
I think my my share screen is Hmm? so my share screen is not coming. Oh, why? So you're not logged in as a host? I am logged in as a host, but it is not showing my. Yeah, this is oh, God. Yes, this is not shared the screen. So, Hare Krishna Prabhu, can you see the screen now? Yes. 3 participants, Anshi Mataji, Atul Prabhu and Giriraj Das. Okay. निष्ठा माता जी ने अटेंड नहीं किया और सौरभ प्रभु Prabhuji, we were the first time we are trying to get हाँ, on I understand. हाँ, YouTube and correct. record. I understand. I understand. So we got Doing the host seva today. Yes, yes. Correct. हाँ, सबकी क्लास चल रही है वहाँ. शुक्रम प्रभु, रानी प्रभु, असीम गोपुत्र प्रभु, everybody has a class. उधर वो संकीर्तन भी चल रहा होगा यू ब्लॉग. Okay, प्रभु. So we'll start. Yes, sir. So ओम I'll just- अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. Okay. Oh, wow. So we have now come to the हम लोग जो है okay, so we are reading prayers of Kunti Maharani. So we know कि भागवतम के अंदर जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, उनमें सबसे जो one of the most famous ones are कुंती महारानी प्रार्थनाएं. तो ये जो जितनी भी प्रार्थनाएं हैं ये हमें पूरे ध्यान से पढ़नी चाहिए. और ये जो आज का श्लोक है, ये तो श्लोक बहुत सारे भक्त, सीनियर भक्त ये मंगलाचरण में भी गाते हैं. They sing in their मंगलाचरण, they sing this wonderful verse. So we'll start with this. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Krishnaya, the Supreme Lord, Vasudevaya, unto the son of Vasudev, Devaki Nandanaya, unto the son of Devaki, Cha and Nanda Gop, Nand and the cowherd men, Kumaraya, unto their son, Govindaya, unto the personality of Godhead, who enlivens the cows and the senses. Which means go का मतलब गो का मतलब काव भी होता है, गो का मतलब सेंसेस होता है, गो का मतलब गोप भी ले सकते हैं, गोपी भी ले सकते हैं. हाँ, सो वह जो उनकी one who enlivens their senses. Nama, respectful obeisances. Nama, obeisances. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Translation and prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Let me therefore offer my respectful obeisances unto the Lord who has become the son of Vasudev, the pleasure of Devaki,
the boy of Nand and the other cowherd men of Vrindavan, and the enlivener of the cows and the senses. तो ये कौन गा रही हैं? ये कुंती महारानी. She is singing these verses or the prayers. Purport: the Lord, being unapproachable by any material assets, out of unbound and causeless mercy, descends to the earth as he is in order, descends to the earth as he is in order to show his special mercy upon his unalloyed devotees and to diminish the upsurges of the demoniac persons. So क्या है? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हाँ, परित्राणाय मतलब कि परित्राणाय साधु नाम, कि साधुओं को संग देने के लिए, उनको मुक्ति देने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, एंड टू एनालाइट द मिसक्रिएंट्स, धर्म संस्थापना, धर्म की संस्थापना के लिए संभवामि युगे युगे. तो भगवान हर युग में आते हैं. तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि he comes, और उसमें से भी उनका जो मेन फंक्शन है वो आचार्य बताते हैं. इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परित्राणाय साधु नाम, कि अपने जो भक्त हैं उनको संग देने के लिए आते हैं. Queen Kunti specifically adores the incarnation or descent of Lord Krishna above all other incarnations, because in this particular incarnation he is more approachable. In the Ram incarnation, he remained a king's son from his very childhood. But in the incarnation of Krishna, although he was a son of a king, he at once left the shelter of his real father and mother, King Vasudeva and Queen Devaki, just after his appearance, and went to the lap of Yashoda Mai to play the part of an ordinary cowherd boy in the blessed Brajbhumi, which is very sanctified because of his childhood pastimes. Therefore, Lord Krishna is more merciful than Lord Ram. वो क्यों है? क्योंकि जो उनकी जो बाल्य लीलाएं हैं वहां पर तो कौशल्या और कौशल्या और जो उनकी जो रानियां थी दशरथ की, उन्होंने ही केवल जो है भगवान राम की जो लीला है वो केवल उन्होंने ही देखी. और जो महल में रहने वाली दासियां हैं उन्होंने देखी, पर मेनली वी सी की कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, और जो उनके घर की मेड्स होंगी, दे ओनली, नोबडी एल्स, बिकॉज राजा के राजकुमार थे. बट कृष्ण जो है, ही नॉट ओनली लेफ्ट, बिकॉज जब उनका जो जेल में उनका जन्म होता है वहां पर प्रिजन हाउस में, तो जो देवकी हैं वो वात्सल्य से भर के वो बोलते हैं कि कंस आपको मार देगा, तो मैं आपको प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि ये जो आपका चतुर्भुज रूप है, हमें पता है कि भगवान जब उनका अपीयरेंस हुआ था, देन ही केम 400 फॉर्म विद मुकुट, ज्वेल्स, एवरीथिंग. सो शी अंडरस्टूड कि लॉर्ड विष्णु हैज कम, बट बिकॉज ऑफ द वात्सल्य मूड, सो शी टोल्ड एंड प्रेड टू कृष्णा कि आप जो है अपने एक साधारण बच्चे का रूप लीजिए, और नंद से बोला, इनको वसुदेव को बोला कि इनको कहीं और ले जाइए क्योंकि इनको कंस मार देगा. तो इसलिए वो जो है वो एक नंद महाराज जो एक वैश्य थे, उनके घर में उनका सारा लालन पालन हुआ, नंद महाराज यशोदा माई के. और वहां पर पूरा जो ब्रजभूमि है, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का, एवरीबडी गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले विद कृष्णा. सो इन दैट मैनर, और इसीलिए बोलते हैं कि जो भगवान की, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें 10th कैंटो के अंदर या कृष्णा बुक में आप पाएंगे बड़े सारे श्लोक हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की बहुत गुणगणना की गई है. तो कि बहुत सारे गुणगान है श्लोकों में, क्योंकि उनकी जो बाल लीला है, दे आर स्पेशल बिकॉज दे डोंट हैपन इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. सो दैट लीला हैपन्स ओनली इन दिस वर्ल्ड. So these Brajvasi, they were so fortunate to see Krishna being born, to all those Jatakaram festival and all those things a small boy did. So Krishna did, and he enlivened all the
cows and the gopas and the gopis. So इसीलिए यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो भगवान राम से ज्यादा जो कृपामय है, मर्सीफुल। आगे पढ़ते हैं। He was undoubtedly very kind to Kunti's brother Vasudev and the family. Had he not become the son of Vasudev and Devaki, Queen Kunti could not claim him to be her nephew and thus address Krishna in parental affection. But Nand and Yashoda are more fortunate because they could relish Lord's childhood pastimes, which are more attractive than all the other pastimes. There is no parallel to his childhood pastimes exhibited at Brajbhumi, which are replicas of his eternal affairs in the original Krishna Loka, described as Chintamani Dham in Brahma Samhita. Lord Sri Krishna descended himself at Brajbhumi with all his transcendental entourage and paraphernalia. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore confirmed that no one is as fortunate as the residents of Brajbhumi, and specifically the cowherd girls who dedicated their everything for the satisfaction of the Lord. His pastimes with Nand and Yashoda and his pastimes with the cowherd men, and especially with the cowherd boys and the cows, have caused him to be known as Govinda. So that's why Krishna is known as Govind. It's a name which is very dear to Krishna. Lord Krishna as Govind is more inclined to the Brahmanas than the cows, indicating thereby that human prosperity depends more on these two items, namely Brahmanical culture and cow protection. Lord Krishna is never satisfied where these are lacking. तो ये हमें देखना चाहिए कि अगर हम कृष्ण को बुलाना चाहते हैं अपने हृदय में तो क्या करना है? So we have to develop Brahmanical qualities like this. Then only Krishna comes in the clean heart. Okay. So next verse. Anybody wants to read? Can raise the hand. Okay. So next verse is very wonderful verse. Next also. Nama pankaj nabhaya, nama pankaj maline, nama pankaj netraya, namaste pankajangre. Nama, all respectful obeisances, Pankaj Nabhaya, unto the Lord who has a specific depression resembling a lotus flower in the center of his abdomen. We can also think of Garbhodakshay Vishnu also, जिनकी नाभि से पंकज निकलता है. पर यहाँ प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं, unto the Lord who has a specific depression resembling a lotus flower in the center of his abdomen. Nama, obeisances, Pankaj Maline, one who is always decorated with a garland of lotus flowers. Nama, obeisances, Pankaj Netraya, one whose glance is as cooling as a lotus flower. Namaste, respectful obeisances unto you, Pankaj Jangraya, unto you, the soles of whose feet are engraved with lotus flower, and who are therefore said to possess lotus feet. Nama Pankaj Nabhaya, Namaj Pankaj Maline, Namaj Pankaj Netraya, Namaste Pankaj Jangre. Translation. My respectful obeisances are unto you, O Lord, whose abdomen is marked with a depression like a lotus flower, who are always decorated with garlands of lotus flowers, whose glance is as cool as a lotus, and whose feet are engraved with lotuses. Here are some of the specific symbolic marks on the spiritual body of the personality of Godhead, which distinguish his body from the bodies of all others. They are all special features of the body of the Lord. The Lord may appear as one of us, but he is always distinct by his specific bodily features. Srimati Kunti claims herself unfit to see the Lord because of her being a woman. This is claimed because women, Shudras, the labor class, and the Dujabandhus
or the wretched descendants of the higher three classes are unfit by intelligence to understand transcendental subject matter concerning the spiritual name, fame, attributes, forms, etc. of the Supreme Absolute Truth. Such persons, although they are unfit to enter into the spiritual affairs of the Lord, can see him as Archavigraha, who descends to the material world just to distribute favors to the fallen souls, including the above mentioned women, Shudras, and Dvijbandhus. Because such fallen souls cannot see anything beyond matter, the Lord condescends to enter into each and every one of the innumerable universes as Garbhodakshaya Vishnu, who grows a lotus stem from the lotus-like depression in the center of his transcendental abdomen, and thus Brahma, the first living being in the universe, is born. Therefore, the Lord is known as Pankajanabi. Pankajanabi, Lord accepts the Archavigraha, his transcendental form, in different elements, namely a form within the mind, a form made of wood, a form made of earth, a form made of metal, a form made of jewel, a form made of paint, and a form drawn on sand, etc. तो ये जो 6-7 जितने भी तरीके बताए, तो इससे क्या है, क्योंकि लोगों के अंदर स्पिरिचुअल, एक कॉमन मैन में एक स्पिरिचुअल विजन नहीं है, तो इसीलिए वो भगवान के जो स्पिरिचुअल शरीर है उसको नहीं देख सकते, ना उसकी विभूति जान सकते हैं। तो भगवान कृपा करके सो कॉल्ड मटेरियल फॉर्म, मटेरियल वस्तुओं में अपनी फॉर्म लेकर आते हैं। हाँ, और ये शास्त्र बताते हैं कि वो जो फॉर्म है भगवान की, वो क्यों आते हैं, ताकि क्योंकि लोगों में स्पिरिचुअल विजन नहीं है, हम आत्मा ही नहीं देख सकते, तो वो सच्चिदानंद भगवान को कैसे देखेंगे। तो उसको उनको वो विजन देने के लिए देन लॉर्ड कम्स इनटू दिस सो कॉल्ड मटेरियल एलिमेंट्स, बट बिकॉज मया दक्षेना प्रकृति, कि जो प्रकृति है वो उनके अध्यक्षता में काम करती है, देन वेयर एवर लॉर्ड डिसेंड्स दैट सो कॉल्ड मटेरियल एलिमेंट ऑल्सो बिकम्स स्पिरिचुअल। तो वो जो फॉर्म है, वो शास्त्र बताते हैं कि चाहे वो फॉर्म भगवान की लकड़ी से बनाए, या मिट्टी से बनाए, या धातु से बनाए, या किसी ज्वेलरी से बनाए, गोल्ड सिल्वर आदि की, या पेंट से ड्रॉ करें, हाँ, या इवन हम माइंड के अंदर भी भगवान के बारे में सोचते हैं। सो दीज आर ऑल बोनाफाइड फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। और ये फॉर्म भगवान क्यों लेते हैं, ताकि वो हमसे सेवा स्वीकार कर सकें। ही कम्स इन द अर्चविग्रह सेवा, सो वन वी कैन रिलेट टू लॉर्ड, है ना, एंड सेकेंड दैट लॉर्ड कैन एक्सेप्ट seva from us. These are the reasons. All such forms, we read further, all such forms of the Lord are always decorated with garlands of lotus flowers. And there should be a soothing atmosphere in the temple of worship to attract the burning attention of the non-devotees always engaged in material wranglings. So this, ये भगवान की ये form है, also act as Madan Mohan. It attracts non-devotees towards the form of the Lord. इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि it should be always nicely decorated and a nice soothing atmosphere should be there, so non-devotees, they feel attracted towards the form of the Lord. The meditators worship a form within the mind. Therefore, the Lord is merciful even to the women, Shudras and Dvijbandhus, provided they agree to visit the temple of worship in different forms made for them. Such temple visitors are not idolaters, as alleged by some men with a poor fund of knowledge. All the great acharyas established such temples of worship in all places just to favor the less intelligent, and one should not pose himself as transcending the stage of temple worship, while one is actually in the category of Shudras and the women or less. तो प्रभुपाद इसका ये भी उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे सैकड़ों हजारों सालों से हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के बहुत सारे मंदिर हैं, अभी के नहीं हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं। हाँ, और तो वो जो आचार्य ने मंदिर बनाए हैं, हाँ, वैसे नहीं थे क्योंकि वो पिछड़े जन्म के पिछड़े लोग थे, या उनमें समझ नहीं थी, हाँ, या वो एक आइडल वर्शिप कर रहे थे, ऐसा नहीं है। हाँ, दे वर द मोस्ट इंटेलिजेंट ऋषिज मुनीज, एंड दे न्यू कि
how the deity Archavigraha form, Lord comes mercifully to accept seva from the normal common man who doesn't have a spiritual vision, है ना. और इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि अपने आप को हमें ज्यादा कि ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि एंड कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट और आई हैव ट्रांसेंड द स्टेज ऑफ टेम्पल वर्शिप while one is actually in the category of a Shudra, no spiritual vision. So like that. There may be a stage when one can transcend, but one should not artificially pose and just out of. जैसे लोग बोलते हैं कि सब जगह भगवान है, तो भगवान सब जगह है, सो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान सब जगह है. हाँ, भगवान सब जगह है, इट इज करेक्ट, बट डू यू हैव द विजन टू सी द लॉर्ड एवरीवेयर, है ना. डू आई हैव द विजन टू सी लॉर्ड एवरीवेयर? सो दैट इज व्हाई दिस फॉर्म इज Archavigraha form is a bona fide form of the Lord. It is very important for us to understand कि जहाँ भी हम भगवान के विग्रह देखते हैं, जहाँ उनकी ठीक से bona fide तरीके से उनकी स्थापना हुई है, then we should understand कि Krishna is there, like this, like this. Okay, Prabhupada आगे लिखते हैं, one should begin to see the Lord from his lotus feet, gradually rising to the thighs, waist, chest and face. कि हमेशा जो भगवान के दर्शन करते हैं वो उनके चरणों से, फिर उनकी थाइस पे, फिर उनकी कमर पे, फिर उनकी छाती पे, तब उनके फेस पे जाना चाहिए. सबसे पहले उनके चरणों के दर्शन करने चाहिए. One should not try to look at the face of the Lord without being accustomed to seeing the lotus feet of the Lord. ये प्रभुपाद, क्योंकि हमारे में भी ज्यादा होता है कि जब हम जाते हैं मंदिरों में, सबसे पहले हम भगवान, immediately our attention goes to his beautiful face. But Prabhupada saying कि first should go to always to his, one should practice कि always first concentrate on Lord's lotus feet, pray to his lotus feet and then gradually grow up. पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कुंती महारानी है वो कैसे प्रे कर रही है, नमः पंकज नाभाया, तो उनकी नाभि से she is starting the prayer. Why? That Prabhupada is telling why. Srimati Kunti, because of her being the aunt of the Lord, did not begin to see the Lord from the lotus feet, because the Lord might feel ashamed. And thus Kunti Devi, just to save a painful situation for the Lord, began to see the Lord just above his lotus feet, that is from the waist of the Lord, gradually rising to the face and then down to the lotus feet. In the round, everything, there is a order. Like this, so she started like this. उन्होंने पंकज बोल रहे पंकज नाभाया, तो पहले नाभि के ऊपर, फिर पंकज मालिने, then garlands of the lotus garlands, the पंकज नेत्राय, फिर उनके नेत्रों के ऊपर, and then पंकज झांगराय. So पंकज झांगराय, then she comes to the, वो घूम के वहां आती हैं. तो पहले इसलिए नहीं आई हैं ताकि कृष्णा शुड नॉट फील एम्बेरेस्ड कि एक, क्योंकि उनकी बुआ लगती थी, तो वो जो है उनके चरणों से शुरू कर रही हैं. सो शी टुक, दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड फ्रॉम हर नेवल. ओके, सो नेक्स्ट. ओके, सो वन सेकंड, आई विल रीड द श्लोक एंड हु हैज रेज्ड द हैंड, लेट मी सी. ओके, अतुल प्रभु and Nishta Mataji. Okay. So give me one second. ये आपका आया नहीं? I can't see on the, okay, आ गया. So 1823. यथा ऋषिकेश खालेन देवकी कंसेना रुधा अतिचिरम सुचर्पिता विमोचिता हम चा समात सहात्मजा विभू त्वेव नाथेन मुहुर विपद्गनात्. Okay, yes. Atul Prabhu, go ahead. Hare Krishna Prabhu. Word to word? Yeah. Word to word translation. Yatha, as it were, Rishikesha, the master of the senses, Khalena, by the envious, Devaki, the mother of Sri Krishna, Kamsena, the king Kamsa,
Rudha imprisoned, Ati Chiram for a long time, Sucha Arpita distressed, Vimochita released, Ahamcha also myself, Saha Atmaja along with my children, Vibho, O great one, Tova Iva, by your lordship, Nathena, as the protector, Muhu, constantly Vipat Ganath, from a series of dangers. Translation: O Rishikesha, master of the senses and Lord of Lords, you have released your mother Devaki, who was long imprisoned and distressed by the envious king Kamsa, and me and my children from a series of constant dangers. Devaki, the mother of Krishna and sister of King Kamsa, was put into prison along with her husband Vasudeva because the envious king was afraid of being killed by Devaki's eighth son Krishna. He killed all the sons of Devaki who were born before Krishna, but Krishna escaped the danger of child slaughter because he was transferred to the house of Nand Maharaj. Lord Krishna's foster father, Kunti Devi, Nand Maharaj, Lord Krishna's foster father. Kunti Devi, along with her children, was also saved from a series of dangers. But Kunti Devi was shown far more favor because Lord Krishna did not save the other children of Devaki, whereas he saved the children of Kunti Devi. This was done because Devaki's husband Vasudeva was living, whereas Kunti Devi was a widow, and there was none to help her except Krishna. The conclusion is that Krishna endows more favor to a devotee who is in greater dangers. Sometimes he put his pure devotees in such dangers because in that condition of helplessness, the devotee becomes more attached to the Lord. The more the attachment is there for the Lord, the more success is there for the devotee. Hare Krishna. So this is clear. So she is aware, Kunti, that how it is Krishna who saved not only Devaki, but also always saved Pandavas and herself, that she was always protected by Krishna's. Okay, next verse, Prabhu. Can you read the Sanskrit, please? I'll read. Yes, thank you, Prabhu. So next, because already 2 minutes are left, so this one, Nishtha Mataji, you read. I'll read the Sanskrit, then you read the word to word. Okay, so this is 1:8:24. Vishan Mahagne Purushad Darshanad Asad Sabhaya Vanvas Krichrita Mride Anek Maharatho Astrato Drani Astras Shashme Hare Abhirakshita. Yes. Nishtha Mataji, go ahead. Hare Krishna. Virasa from poison. Maha Angehe from the great fire. Purushada, the man-eaters. Darshanat, by combating. Asat, wise. Sabhyaha, assembly. Vana, vasa, exiled to the forest. Krachitaha, sufferings. Mride, again and again in battle. Aneka, many. Maharatha, great generals. Astrataha, weapons. Daruni, the son of Dronacharya. Astrataha, from the weapon of. Cha and Asma, indicating past tense. Hare, O my Lord. Abhir Akshitaha, protected completely. Translation and purport by by His Divine Grace Srila Prabhupada. My dear Krishna, your Lordship has protected us from a poisoned cake, from a great fire, from cannibals, from the Vakyas assembly, from sufferings during our exile in the forest, and from the battle where great generals fought. And now you have saved us from the weapon of Ashwadhama. Purport. The list of dangerous encounters is submitted herein.
Devaki was once put into difficulty by her envious brother, otherwise she was well. But Kunti Devi and her sons were put into one difficulty after another for years and years together. They were put into trouble by Duryodhana and his party due to the kingdom, and each and every time the sons of Kunti were saved by the Lord. Once Bhima was administered poison in a cake. Once they were put into the house made of shellac and set afire. And once Draupadi was dragged out, and attempts were made to insult her by stripping her naked in the vast assembly of the Kurus. The Lord saved Draupadi by supplying an immeasurable length of cloth, and Duryodhana's party failed to see her naked. Similarly, when they were exiled in the forest, Bhima had to fight with the man-eater demon, Hidambana Rakshasa, but the Lord saved him. So it was not finished there. After all these tribulations, there was the great battle of Kurukshetra, and Arjun had to meet such great generals as Drona, Bhishma, and Karna, all powerful fighters. And at last, even when everything was done away with, there was a Brahmastra released by the son of Dronacharya to kill the child within the womb of Uttra. And so the Lord saved the only surviving descendant of the Kurus, Maharaja Parikshit. Hare Krishna. कृष्णा थैंक यू माधुरी सो ये प्रभुपाद यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि बिटवीन देवकी और कुंती महारानी व्हाट इज अ कंपैरिजन सो कंपैरिजन इज कि ठीक है देवकी अदरवाइज वाज ओके ओनली व्हेन लास्ट के फ्यू इयर्स शी वाज इन द प्रिजन बिकॉज यू नो और वहां पर भी एक एक करके वो बच्चों की उनकी मृत्यु होती रही उनको दुख जरूर हुआ बट उनको एक आशा थी कि 8वां बच्चा कृष्ण आएगा सो इवन दो चिल्ड्रन आर डाइंग न्यू बॉर्न बेबीज आर डाइंग एंड देयर इज अ डेफिनेटली ग्रीफ फॉर द चाइल्ड हु इज बीइंग killed cruelly by Kansa but within that also there is a cerebral lining कि कृष्ण आएंगे भगवान विष्णु आएंगे कृष्ण आएंगे जो इसका वध करेंगे वो 8वां बच्चा आएगा बट कुंती के केस के अंदर ऐसा नहीं है बल्कि एक के बाद वो कष्ट उनको आते ही चले गए कि किस तरह से उनको बार बार दुर्योधन मारने की कोशिश करता था कभी घर जला दिया कभी भीम को जो है जहर देके पानी में फेंक दिया गंगा के अंदर कभी उनकी बहू को इस तरह से घसीट के लेकर पूरी सभा के अंदर जो पूरे कुरु खानदान की जो बहू है दे ट्राई टू डिसरोब हर लाइक दिस सो वन आफ्टर देन क्वीन होते हुए देन 14 साल के लिए ये लोग 13 साल के लिए जंगलों में रहे तो एक के बाद कष्ट उनके आते ही चले गए तो इसीलिए तो उनके जो कष्ट है वो बहुत ज्यादा है कुंती के सो व्हाट शी विल स्पीक अबाउट ऑल दिस कष्ट विल हियर टुमारो कि व्हाट इज कुंतीज टेक ऑन ऑल ये जो पीड़ाएं आ रही है जो कष्ट आ रहे हैं इसके ऊपर कुंती महारानी का क्या टेक है कितने कष्ट आए इतना दुख सहा सो कॉल्ड अब उस पे ऊपर कुंती महारानी क्या कहती हैं सो विल हियर दैट मोस्ट वंडरफुल वर्ड्स टुमारो और आप लोग पढ़ सकते हैं वो अगला जो श्लोक है 25वां नंबर सो एंड यू विल फाइंड इट्स अ वंडरफुल श्लोक एंड प्रेयर जिसको कोई भी भक्त गाते हुए डरता है so, ना केवल वो श्लोक बहुत अच्छा है और बड़ी अच्छी प्रेयर है पर उसको कोई भी भगवान का भक्त उसको उस प्रेयर को गाते हुए डरते हैं they don't come so easily so thank you so much so if anybody has a question we can take otherwise we'll end the session now okay so we'll end the session now वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण
Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.